Hello everyone, welcome to this video. I'm Sudhir and now I'm going to tell you the most important strategy to cover the institute study material. It is not possible for us to remember all the concept, all the sums and all the chapters which are going to study in this module, right? I think you completed with your syllabus and now you are in the at the time of revising your concept and the sums you have learned in your classes, or you are doing your self study, right? So it is not possible to remember all the concept, so you have to make a category like category A, category B, category C, and then in that way you have to prioritize which chapter is more important, and I have to do that chapter, and that chapter definitely come in an exam. Suppose you are going to study the entire model, right? And you are not able to crack which chapter is more important, then it is not possible you to attend the entire chapter or entire sum in the exam, right? You have to make a strategy how you can achieve, how you can prioritize the questions. So you have to do past paper analysis, right? Which type of question are coming in the exam and which type of question came in the past exam, right? So you have to prioritize, but I am going to help you to find out which chapter you have to prioritize and how can you categorize the questions, right? So first of all we have to go index wise, right? Which section is more important? We are having how much? Three sections, right? In three sections what you have to learn, I am going to tell you, right? First one, that is section A, introduction to cost accounting, means you have to learn one theory questions, right? In the from basic introduction to cost accounting, you have to learn one basic concept. In the previous exam June 24, one question is asked, that is uh, benefit of ABC costing, right? Not activity based costing, it is ABC analysis, right? Second one is weightage 5%, means MCQ, definitely MCQ will come in this chapter. Second one is cost ascertainment, element of cost, means you have to prepare a cost sheet. In last paper, in last two paper, the cost sheet from the itself books are study material. There is no other question. Our study material is enough to do cost sheet. So in our study material, maximum 5 to 6 questions are there on the best on the cost sheet. So you go through all the entire questions from the study material. In costing standards, categorized as B, because there is a theory questions, right? Cost bookkeeping, means cost reconciliation. You have to at least practice uh, two sums from normal reconciliation and two sums from ledger with, matlab, means you have to prepare a cost sheet and then you have to compare under absorb हुआ या over absorb हुआ, then you have to do, right? Then method of costing. In method of costing we had a lot of chapter, and it is not possible to remember all the chapters and all the concept. Like you have to remember contract accounting, process costing, right? Batch costing, job costing, by product, joint product, a lot of topic you have. I will tell you which topic you have to do as important. Next is cost accounting technique, means you have to learn standard costing, budgetary control, फिर then of course standard में बहुत सारे रहेंगे. We will discuss on that. Let's continue, go ahead. So introduction, first chapter as R is introduction to accounting. So I think I have to go from here only, right? Section A. Here is the introduction to cost accounting, means module 1. You have to do MCQ from the the end of the module 1, right? So then you have to start your preparation. So the maximum chances from module 1 MCQ will definitely come, either for two questions or one questions. So you can't skip this module, right? Next is material costing. In material costing, I will tell you one question where you have given multiple
ordering, right? 500, 2000, 3000, 4000, and annual demand is given. You have the question will ask you which lot is beneficial for us, means you have to find EBQ, but not with the help of formula, but applying the strategy, that is carrying cost and ordering cost जहाँ पे minimum होगा, that will be our EBQ. So you have to find that the maximum possibility of that question only. In material costing, the only one question is important. You if you do अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, देन आप समझो आपका मटेरियल कॉस्टिंग हो गया. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय कॉस्टिंग, मीन्स लेबर कॉस्टिंग. हियर यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू आपने क्वेश्चन किया रहेगा, राइट, जहाँ पे एक को हेल्सी के थ्रू दिया जाता है, एक एन रोहन के थ्रू दिया जाता है, जहाँ पे दोनों का बोनस इक्वल होता है, राइट, उनका वेजेस सेम होता है. तो आपको वेजेस फाइंड आउट करना है. तो वेजेस कैसे निकालना है, तो वहाँ पे क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि दोनों को ने टाइम दिया गया, दोनों को बोनस दिया गया, दोनों का वेजेस रेट सेम है, तो आप वेजेस रेट निकालो. सो दैट क्वेश्चन इज मार्क एज इम्पॉर्टेंट. देर इज नॉट अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. बाकी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला डालो, आंसर आएगा. एंड वन इज फ्लक्स मेथड यू हैव टू डू, राइट. नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देर इज नो सच important question from this section. Overheads. From overheads the question will come like first cost overhead absorption, राइट. इसमें आपको आ सकता है पहला किसी बेसिस पे आएगा, दूसरा साइमल्टेनियस, मीन्स आपको दो मेथड कर लो. ओवरहेड खत्म, नो नीड टू वरी अबाउट एनी चैप्टर्स. अंडर एब्जॉर्प्शन में आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट खोजो एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो. देन ओवरहेड्स में आपको 3 टॉपिक मैंने बताया. ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कैसे करना है, सेकेंड बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन आप करके रखो. थर्ड मैंने बोला कि आपको सप्लीमेंट्री रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उतना करो, आपका ओवरहेड ख़त्म. आपको सी एस में मैं एज ऑफ नाउ इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ कोई, ठीक है. कॉस्ट बुक रिकॉर्डिंग में जैसे आपको मैंने उधर ही बताया, तो कॉस्ट बुक में आप क्या करो, कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन करो, और नॉन इंटीग्रेटेड में आप इंटीग्रेटेड करो. इंटीग्रेटेड को करो, और उसमें आप मालूम है क्या करो, इंटीग्रेटेड जो कर रहे हो ना, उसमें आप जस्ट जर्नल एंट्री करो, क्योंकि लेजर नहीं पूछ सकता. अगर लेजर पूछा तो 14 मार्क्स का पूछेगा, जो कि इंस्टीट्यूट के लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना. अगर वो यहाँ से 40 मार्क्स से क्वेश्चन बनाएगी, तो बाकी जगह से क्वेश्चन उठा ही नहीं पाएगी, राइट. तो वो 7 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन दे सकती है. नाउ कम टू आवर सेक्शन बी, दैट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग. तो इन जॉब कॉस्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, एब्जॉर्प्शन रेट खोजना है, और एज पर जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम एज बैच कॉस्टिंग, जब आप एक बैच को बना रहे हो, तो आप कितना कॉस्ट इनकर कर सकते हो, आप बैच वाइज निकालोगे. तो इन दोनों में तो आपको कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो जॉब कॉस्टिंग भी पेपर में आपको उतना पड़ रहा है, इसको सेक्शन बी में डाल दो, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यस, कैटेगरी ए में डालो इसको. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वैरायटी क्या आ सकता है, तो सबसे पहले आपका वैरायटी है फाइंड आउट द वर्क अनसर्टिफाइड. मीन्स आपको सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन रहेंगे, बोलेगा इतना वर्क कंप्लीट हुआ, इतना वर्क सर्टिफाइड मिलेगा, इतना वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ. तो व्हाट विल बी द वर्क अनसर्टिफाइड, बिकॉज आपको बाकी सारी अमाउंट दिए रहेंगे, ठीक है. फिर आपका एस्केलेशन क्लॉज इम्पोर्टेंट है, वो करके जाओ. बाकी आपको अगर दिया है तो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दे सकता है, तो आपको उसमें क्या याद रखना है, क्यूमुलेटिव बेसिस आपको याद रखना है. ऑल्सो आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से किया रहेगा, देन you can easily find out what I am saying and what questions I am giving you prioritize. You have to do that question, right. Process costing, in process costing simply प्रोसेस तो हमारा आएगा नहीं, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, राइट. तो आपको इसमें जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट टॉपिक करना है. फिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी पॉसिबिलिटी है आने का, बट नहीं उतना नहीं है, कैटेगरी बी. बट जॉइंट एंड बाइंग प्रोडक्ट कैटेगरी ए. नॉर्मल लॉस आपको सिंपली क्या होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो क्या है. नाउ कम टू आवर थर्ड, दैट इज कॉस्ट टेक्निक.
In cost technique, marginal costing. So in marginal costing, you have to do only a simple topic, that is marginal costing with limiting factor. Means here even na application of marginal costing for decision making, right? तो this category you have to do. ऊपर के कैटेगरी नहीं करते हो तो भी चलेगा. जस्ट ऊपर के कैटेगरी आप सिंपली एमसीक्यू के लिए रखो ना. Prioritize your 6.1.5, that is application of marginal costing for decision making, right? सो लिमिटिंग फैक्टर आपका लेबर हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है. मीन्स यू हैव टू मेक एक्सपोर्ट, और इफ़ यू आर मेकिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ टू प्रोडक्ट, तो विच प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, बजट इन बजटरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस कॉस्टिंग. इंस्टीट्यूट हमेशा मटेरियल एंड लेबर पूछती है. तो मटेरियल एंड लेबर आप सिंपली मॉड्यूल का करो. बट मैं बोलूँगा लेबर के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में दे रखना है, जो कि आपका है लेबर आपको कब रिवाइज बनाना है और कब जो एक्चुअल डेटा दिया है वो लेना है. तो आप अभी के जो जून 24 का पेपर है, आप वहाँ से पेपर देखो एंड देन एनालाइज करो कि वो सम आपसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि वहाँ वो जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे रिवाइज नहीं निकालना है, जो एक्चुअल डेटा है उसी से करना है. Budget and budgetary control are last module. So in budget and budgetary control, what you have to learn or what you have to do as simply to cash budget, sales and production budget, purchase and production budget. That's it. There is no need to worry about chapter इतना है, इतने sums है, इतने topics है, कैसे होगा, right? No need to worry about it. You have already done your classes na. Prioritize. I'm just telling you which question you have to definitely do without any chance, right? You have to do and you have to do it, right? So this is our important strategy. So either you can write it on your book or you can mark it on your module as important. So we will make in our next video of the next subject, right? Till now, thank you and bye bye. All the best.